हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASIT'S बॉटनी। आज लेक्चर रे आज आम देखा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। आम प्रीवियस लेक्चर रे देखते कौन बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप शेप साइज आउ बैक्टीरियल डिफरेंट कौन टाइप्स जमती कि आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया तार न्यूट्रिशन केमती थिला तार रिप्रोडक्शन केमती थिला। आज आम देखा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल बा यू बैक्टीरियल सेल। यू बैक्टीरियल सेल रो स्ट्रक्चर देखा। देखो यहाँ गोटे टिपिकल बैक्टीरियल अल्ट्रा स्ट्रक्चर आम कौन कौन स्टडी करवा लेबलिंग देख करवा। यहाँ हूँ फ्लाजेला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाजेला? द फ्लाजेला फंक्शन इज कौन लोकोमोशन और मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। द फ्लाजेला इज responsible for locomotion or movement of bacterial cell। एबे देखिवा the cell envelope of bacteria is divided into three layers। The three-layer cell envelope of bacterial cell comprises of the outer layer glycocalyx, middle layer is cell wall, and inner layer is cell membrane। Okay, inner layer is cell membrane or that is also called as plasma membrane। Okay, glycocalyx is the outermost layer of cell envelope of bacterial cell। Glycocalyx has two forms, one is capsule and another is slime layer। Okay, the glycocalyx has two forms, one is capsule and another is slime layer। Capsule is thick and tough or hard form, slime layer is thin and soft form। Okay, slime layer is thin and soft and capsule is thick and tough means hard form। Okay, एतिक रहिला। एटा जो थिक और हार्ड कहीं ना टू गिव प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल, that is the outermost layer of the cell envelope, so that is mainly responsible for the protection of bacterial cell। Next wall is cell wall। Okay, cell wall of bacterial cell is non-living structure। Okay, non-living or that is rigid structure means hard structure। The function of cell wall that is responsible for providing shape and protection to the bacterial cell। The function of cell wall is to provide shape and protection to the bacterial cell because it is a rigid and non-living structure। And I will also told that the cell wall of bacterial cell made up of peptidoglycan। Okay, the composition of bacterial cell is peptidoglycan or murine। मुझे previous class रे भी कही थी peptidoglycan और murine तार सब यूनिट गुरा कौन थिला NAG and NAM, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, that is the sub unit constituents of peptidoglycan। Okay, cell wall कौन आमर ग्लाइकोकालिक्स सरला। एबे देखिबा सेल मेम्ब्रेन that is the innermost। सेल मेम्ब्रेन न कौन रहिला? सेल मेम्ब्रेन is also called as plasma membrane, जो थे कि that is a semi permeable membrane। Why this is called as semi permeable? Meaning that can allow some substances in between them because they have certain pores in cell membrane। Cell membrane have certain pores, so they can allow some substances but cannot allow some micromolecules। Okay, so that is called as semi permeable membrane। सेल मेम्ब्रेन करिवो किछि सब्सटेंस को और किछि मॉलिक्यूल को सेल भितर को छाड़िबो बट किछि मॉलिक्यूल को छाड़िबो नहीं। सेटा कोन ट्रैफिकिंग सिग्नलटा बुझि पाइलो। तेणु किछि मॉलिक्यूल को छाड़िबोनी सेटा कोन सेल फेरिकी पळेबो। तेणु सेल मेम्ब्रेन मेन फंक्शन ताले कोन रहिला द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्ट ऑफ substances। Okay,
सेल मेम्ब्रेन मेन फंक्शन होची ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, let us know that is pili and the small part is called as fimbri. Pili and fimbri. Okay, pili is made up of which protein? Pillin protein, and it is also called as sex pilus because it helps in conjugation tube making. ओके, मुझे कही जे आमर जेनेटिक रिकम्बिनेशन गोटे स्टेप अच्छी कंजुगेशन जो थे कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय कंजुगेशन ट्यूब. द कंजुगेशन ट्यूब मेकिंग रे किए हेल्प करिवो? पिली और पिलिन प्रोटीन सेटा हेल्प करिवो जो थे कि जेनेटिक मटेरियलटा गोटे सेल आ गोटे सेल को ट्रांसफर होगी जीव. से ट्रांसफरटा किए करिवो? ट्रांसफरटा यही सब्सटेंसटा करिवे. एटा कोन? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और दैट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और it is DNA carrier. Plasmid means DNA carrier और it is the vehicle of genetic material. Plasmid जोटा कि एपट सेल को ट्रांसफर करिकी नबो. आउ कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन किए करिवो? पिली करिवो. ओके, आउ फिम्ब्री रो काम कोन? फिम्ब्री कोन ना अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टू दी होस्ट सेल सरफेस. ये कोन करिवो? अटैचमेंट रे हेल्प करिवो. एटा गोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. Fimbri is the finger-like structure that help in attachment of bacterial cell to the host cell surface. धर एटा host cell जोटा को कि माने प्लांट हो पारे, एनिमल हो पारे, ह्यूमन हो पारे, बैक्टेरिया जहाँ को अफेक्ट करिवो सेतेबेले कोन हबो? होस्ट सेल सरफेस रे बैक्टेरियल सेलटा अटैचमेंट हवा पई जो स्ट्रक्चरटा ताको हेल्प करिवो दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्री. ओके, आउ कोन रहिला हमर एई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शनटा अछि जोटा सेल मेम्ब्रेन नो बाहरी छि दैट इज कॉल्ड कौन? मन रखिबो दैट इज कॉल्ड मेजोजोम. एटा होची मेजोजोम. मेजोजोम और फंक्शन कौन? सेलुलार रेस्पिरेशन. हला एटा कौन करिवो? सेलुलार रेस्पिरेशन माने सेल ले रेस्पिरेशन प्रोसेस करेइबो मेजोजोम. रेस्पिरेशन माने श्वसन प्रक्रिया बा तार ब्रीदिंग प्रोसेस. सेठी कौन हबो? सेलुलार रेस्पिरेशन प्रोसेस रे कहीं मेजोजोम रे हबो कहीं ना तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मेजोजोम. मेजोजोम ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम पूरा अछि. एटा होची मेन स्ट्रक्चर. एटा कोन? सेंट्रल स्ट्रक्चर जोटा तार जेनेटिक मटेरियल. द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड और इट इज द इंसिपिएंट डीएनए. बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसिपिएंट? बिकॉज it is a prokaryotic cell. In prokaryotic cell true nucleus is not present, so that is called incipient nucleus or nucleoid, which is double stranded circular and naked DNA. Double stranded circular naked DNA. Why it is called as naked DNA? Because histone protein absent. That is called histone protein absent. So that is called naked DNA. कहीं ना histone protein absent in bacterial cell जो न्यूक्लियसटा अच्छे से हिस्टोन प्रोटीन absent अच्छी. बट न्यूक्लियसटा जोटा अच्छी कौन आमर जो न्यूक्लियस अच्छी यूकैरियोटिक सेल तार जो डीएनए अच्छी तादरे कौन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी जी कि पैकेजिंग रे हेल्प करूची जोटा कि सेठी कौन न्यूक्लियोजोम फॉर्मेशन हो पारुची. बट एटी फॉर्मेशन हो पारिबनी. एटा इंसिपिएंट डीएनए और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए. इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. ओके, एगुरा कौन? एगुरा होची राइबोजोम. राइबोजोम रो काम कौन? राइबोजोम रो काम होची प्रोटीन बनैबो. राइबोजोम रो काम कौन? राइबोजोम रो काम होची प्रोटीन सिंथेसिस. मन रखियो तमे राइबोजोम रो काम होची प्रोटीन सिंथेसिस. हला
राइबोसोम टा को टाइप रो थाए 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट देयर सब यूनिट इज 50S and 30S what is S is the sedimentation coefficient okay or it is also called as fed box unit ribosome is 70S in case of prokaryotic cells ribosome ro function kono na protein synthesis करेइबो okay एगुरा कोन that is called as chromatophores is the bacterial pigment containing organ बैक्टेरिया रो जो जगह रे पिगमेंट गुरा स्टोर हेकी अछि जेमति कि यूकैरियोटिक सेल रे प्लास्टिड अछि पिगमेंट स्टोर करिया पई सेमति बैक्टीरियल सेल रे कोन अछि क्रोमाटोफोर अछि जो सब पिगमेंट अछि जेमति कि बैक्टीरियोक्लोरोफिल कैरोटिनॉइड ये सब पिगमेंट गुरा जोरा कि सियानोबैक्टीरिया को कलरेशन प्रोवाइड करूची से सब को जगह थाए क्रोमाटोफोर भितरे पिगमेंट गुरा स्टोर हेकी थाए हैला आ जो डॉटेड गुरा देखुचो डॉटेड गुरा कोन डॉटेड गुरा होची इंक्लूजन बॉडीज माने फूड रिजर्व ए डॉट गुरा अछि दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज माने स्टोरेज फूड आ भितरे अछि स्टोरेज फूड in the case of inclusion bodies the food is stored in the form of some granules that is cyanophysin granules glycogen granules lipid granule means small globular form जो थरे कि inclusion bodies भितरे food store हेकी रहइबो in the form of carbohydrate lipid fat ए सब फॉर्म रे food store हेकी रहया पई इटा अछि सो हमरो होल स्ट्रक्चर उपरे मु डिस्क्राइब कली जो थरे कि कोन अछि फ्लैजेला अछि लोकोमोशन पई राइबोसोम कोन पई अछि प्रोटीन सिंथेसिस पई ग्लाइकोकालिक्स प्रोटेक्शन दवा पई अछि जार दीटा फॉर्म अछि गोटे हला कैप्सूल आ गोटे स्लाइम लेयर सेल वॉल कोन नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जोटा कि दैट कैन प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जोटा कि हमको ट्रांसपोर्ट करोची कोन सब्सटेंसेस बैक्टीरियल सेल बाहर भीतर को के भीतर बाहर ट्रांसपोर्ट पई रेस्पोंसिबल पिली कोन पई रेस्पोंसिबल पिली होची मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन एंड दैट कैन फॉर्म कंजुगेशन ट्यूब फिम्ब्री हेल्प टू अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टू द होस्ट सेल सरफेस क्रोमाटोफोर हेल्प इन पिगमेंट स्टोरिंग एंड प्लाज्मिड हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू द अनदर nucleoid it is the genetic material which is double stranded circular naked DNA mesosome help in cellular respiration okay these are that enough for the structure of bacterial cell so एटा तमे कोन करिवो डायग्राम भलो से देखिवो मो जहाँ भी स्ट्रक्चर लिखिली ताकू मो नोट रे प्रोवाइड कर देछि ताकू भल से देखिवो आ भलो से वीडियोटा को फास्ट टू लास्ट जाय देखो कोनोसी भी डाउट हेले तमे कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबो थैंक यू आउ आम चैनल टाकू सब्सक्राइब करिवो थैंक यू।